Hello, everyone. I hope you are having a great time. And if you're not on this live stream, I'm not sure if you have got the message, but I'm going to be talking about this book that I'm reading currently. This is Hooked, and it's a great book. I mean, I just had a ball of a time reading it. I've read about 90 pages, 90 plus pages per day, and today in this particular, stream, we'll talk about what this book is all about. क्या इसमें बताया है नीर इयाल जो इसके राइटर हैं और क्या डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली. So Nir Eyal, the author of this book, has discussed about habits basically, and he has given it the name of hooked. What it means is that what all habits do we get hooked to in our life? I mean, there are certain things that we are really interested in from the time we get up to the time we go to sleep. ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी का बहुत एसेंशियल पार्ट बन गई हैं, स्पेशली जब से टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर. डेटा बहुत इजीली एक्सेसिबल. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट डेटा, easy to use products like smartphones, internet TVs, smart TVs, Android TVs, जहाँ पर आप internet पे access कर सकते हो. And once 5G comes in, a lot of other things will come into picture as well. Other than that, you have access to all these, smart, items along with it, like smart watches, जहाँ से आप call कर सकते हो, picture save कर सकते हो, and all of that. Combined with all of that today, business, I mean, business companies have a very easy task in a way to provide a product to customer. और ये book मैंने इसलिए भी पढ़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि being a content creator, being somebody who's providing a service which could be of value to people who watch my videos and who enjoy or engage in it. अभी थोड़ा नंबर है लेकिन होपफुली विद टाइम पीपल विल बी इंटरेस्टेड. तो ऐसा क्या है क्रिएटर्स के लिए, बिजनेस के लोगों के लिए, कि वो ऐसी हैबिट्स या फिर ऐसी पॉजिटिव हैबिट्स अपने ऑडियंस, अपने सर्विस जैसे मैं कर दे रहा हूँ उसमें ऑडियंस और कंटेंट क्रिएटर्स एंड बिजनेस के लिए ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जो कि कंज्यूमर उसमें हुक्ड हो जाए. सो in a nutshell, he has talked about various companies, given examples of various companies. और ये बहुत easy to understand book है. कोई ऐसे jargon नहीं फेंका है नीर याल ने जहाँ पर आपको कोई confusion होगी किसी भी form की. And he's talking about something which is related to technology, and we all youngsters, people who are in their 20s, 30s, even in 40s, can easily relate to these technologies. So basically, मैंने एक बुक पढ़ी थी और ये बुक यहाँ पर है बुक शेल्फ में. मैं आपको दिखाता भी हूँ. It is right here. ये बुक है हैबिट. मैंने ये बहुत पहले 2 साल पहले खरीदी थी और आई रेड इट. सो इन अ वे, इन दिस पर्टिकुलर um, book, he's talked about this cycle wherein a trigger takes place. A trigger meaning जैसे कोई भी चीज़ करने का आपको मन होता है, जैसे कहते हैं एक मन कर रहा है कुछ करने का, तो why this happens, trigger, which is a like a kick to an engine. अगर हम बाइक स्टार्ट करते हैं तो हम किक मारते हैं ना, तो किक इसलिए इंजन में एक स्पार्क प्लग होता है, वो इनिशिएट होता है और वहाँ से पेट्रोल जाता है एंड देन गाड़ी स्टार्ट होती है. सो ही टॉकिंग अबाउट द साइकिल ऑफ ट्रिगर. ट्रिगर से जो एक्शन हुआ और एक्शन से जो रिवॉर्ड मिला, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल दोस अदर थिंग्स दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट, विल टॉक अबाउट लेटर. बट राइट नाउ इन दिस बुक ही इज टॉक अबाउट दिस साइकिल. बट द ओनली डिफरेंस इज कि इस साइकिल में, जो कि हैबिट का साइकिल है, इसमें डिफरेंस ये है कि कैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट और क्रिएटर्स कैसे अपनी सर्विसेज ला सकें जिससे कि ये साइकिल उनके लिए यूजफुल बन सके. तो he has clearly mentioned in the first few pages of the book कि it's not about bigger companies. This book is not for companies like Google or Microsoft, making products better for their consumers. But this book is about, entrepreneurs who are just starting out, like me, like, people who are in their, initial phases of building products which could be beneficial to consumer. जैसे कि कुछ भी हो सकता है. इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आर द रेज. और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जैसे कि बोट के ईयरफोन्स हैं, ईयरफोन कंपनीज़ हैं, बहुत सी और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर न्यू पीपल आर कमिंग इन एंड मेकिंग देयर प्रोडक्ट्स. सो उनके लिए ये बुक है. और ये बुक बताती है एक ऐसी बात कि किस तरीके से हम यूज़र इंगेजमेंट बढ़ा सकें. सो इसमें इन तीनों के बारे में बात की गई है एंड इवेंचुअली इट गोज़ टू एक्शन.
So today we'll talk about trigger because that's the chapter that I have read, and I have read action too. But we'll not discuss it today because it's a lengthy discussion. Will take few minutes, of course. So इस ट्रिगर में ये बात करते हैं दो टाइप की ट्रिगर की, जो कि एक्सटर्नल ट्रिगर होता है और एक इंटरनल ट्रिगर होता है. तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट के यूज टू नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी है, एक नया प्रोडक्ट लाती है मार्केट में. कुछ भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं जैसे ब्रश का. ठीक है. तो वी जस्ट गो एंड बाय कोलगेट ब्रशेस. आई मीन वी आल्सो बाय सम अदर ब्रशेस टू ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग. लेकिन एक एक हैबिट फॉर्म हो गई है शायद हमारे इस ब्रांड को लेकर. तो जब ये ट्रिगर आपके मन में आता है तो वो एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं होता, ये इंटरनली ऑलरेडी फॉर्म्ड है हमारी हैबिट में. कि मतलब जैसे सुबह उठ के दौड़ने जाना, ऐसे ही ब्रश करना. तो मैं उठा और मैंने ब्रश किया, और जब मैं जाऊँगा मार्केट में अगर मेरा ब्रश ख़राब हो गया, तो मैं वही 2-3 ब्रांड जो कि हैं मेरी, उनमें से एक का ब्रश उठा लूँगा और ब्रश करूँगा उसी से, वो प्रोडक्ट है. तो इफ़ अ न्यू एंट्रेंट कम्स इन, हाउ डज़ ही मेक श्योर कि आपकी अटेंशन वो ग्रैब करे. तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि ट्रिगर उसको एक एक्सटर्नल ट्रिगर करना पड़ेगा. एक्सटर्नल ट्रिगर कौन से होते हैं? एक्सटर्नल ट्रिगर होता है कि या तो वो आपको ईमेल भेजेगा, या फिर आपको मैसेजेस करेंगे वो लोग, या फिर कॉल्स, या फिर कोई ना कोई ऐसे प्रकार का इन्वेस्टमेंट के थ्रू दे विल बी एबल टू इंगेज विद यू. करेक्ट. नाउ कम्स द पार्ट वेयर दे टॉक अबाउट इंटरनल ट्रिगर. कहते हैं कि जब एक्सटर्नल ट्रिगर हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं हमारे, तो इंटरनल ट्रिगर हमारे आ जाते हैं. मतलब कि अब हमारे कॉन्शियसनेस में आ गया कि एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं, और कॉन्शियसनेस में ये बात आ गई है कि मुझे वो काम करना है. और बस अब मेरे को अंदर एक जब फीलिंग आ जाती है कि मुझे वो काम करना है, तो एक इंटरनल ट्रिगर जान अपने अंदर इंगेज होता है, जो कि ये पुश करता है मुझे उस काम को करने में. सो दैट्स व्हाट नील रियाल टॉक्स अबाउट इन दिस बुक. एंड he says that there are two types of triggers basically. And then he touches upon few points like न्यूरोसाइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि, आई जस्ट रीड इट आउट टू यू दैट believe habits give us the ability to focus our attention on other things by storing automatic responses in the basal ganglia. मतलब ये कहने का मतलब है, मैं इसको खुद भी बोल सकता था लेकिन मैं पढ़ के ऐसे सुनाना चाहता कि ये बात आपको समझ में आए कि जो हैबिट्स होती हैं हमारी, वो हमारी बेसल गैंग्लिया, एक पार्ट होता है ब्रेन का, उसमें स्टोर हो जाती है. ये न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं. और जब भी कोई हैबिट हम फॉर्म कर लेते हैं, तो हम उसके बारे में कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं. जैसे मैंने ब्रश किया सुबह उठकर, तो मेरे वो दांतों में ही जाएगा वो, क्योंकि मुझे पता है उससे ब्रश होता है, राइट. इट्स अ हैबिट. इफ आई एम गोइंग ऑन आउट ऑन अ मॉर्निंग जॉग एंड इफ आई सी समबडी, अ फ्रेंड ऑफ माइन, आई विल वेव आउट टू हिम. तो ये भी एग्जांपल ऑथर ने दिया है कि वो एक बार क्या होता है कि वो मॉर्निंग जॉग करने जाते हैं हफ्ते में 3 बार. लेकिन एक बार क्या हुआ, क्लाइंट की वजह से उनको सुबह में कॉल लेना पड़ा, मॉर्निंग कॉल. और उस मॉर्निंग कॉल की वजह से उनको इवनिंग में वो नहीं जा पाए, मॉर्निंग में वो नहीं जा पाए, आई एम सॉरी. और मॉर्निंग में वो जा नहीं पाए, इसकी वजह से वो इवनिंग में गए. और जब उनका जो हैबिट था, लेट मी जस्ट गो हेयर एंड शो इट टू यू, गिव मी अ सेकंड. आई एम सॉरी फॉर दैट. बट सो मैं एक इवनिंग रन के लिए जाता है क्लाइंट, उनको मतलब बिकॉज ऑफ द क्लाइंट कॉल इन द मॉर्निंग. एंड व्हेन दैट हैपेंस इन द इवनिंग, he has a habit of going on a morning jog and waving to somebody whom he sees. So he waves to a woman in his neighborhood, thinking that it is morning, but it's not morning. So he just has this habit of doing it, and he forgets that he's actually jogging in the evening. The point that I'm trying to make is कि हैबिट जब हमारे फॉर्म हो जाती हैं, तो हम कॉन्शियसली नहीं डिसाइड करते हैं, वो अनकॉन्शियसली हमारे ब्रेन में होता है, एंड वी स्टार्ट टू एक्ट आउट दोज थिंग्स. एंड फिर राइटर इस बात पे भी एम्फोसिस देते हैं कि ही सेज फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक टू मेंशन टू यू, कि जब हैबिट फॉर्म हो जाती हैं, अगर इफ़ यू आर एबल टू फॉर्म अ हैबिट इनसाइड अ कस्टमर्स माइंड,
सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ही विल गेट, इफ़ ही गेट्स यूज टू इट एंड इफ ही engages with it, then the customer lifetime value, which means that amount of money that he'll pay to you over a period of time, until the time either he switches to another competitor, or he passes away, unfortunately. Till that time, whatever money that you have collected off him, that becomes CLTV. और एक क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए बहुत, क्रेडिट कार्ड कंपनी में सबसे बड़ा CLTV होता है। मतलब कब कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर बनाता है अपना, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो क्रेडिट कार्ड बंद कर दे बहुत जल्दी। He will, I mean, I have a credit card, HDFC credit card. I have had this card for about 16 years. So 16 साल तक HDFC ने मेरे से जो भी इंटरेस्ट कमाया है, that is their CLTV that they have earned till now from me. If I close a credit card today, then that will be their loss, and I move to somebody else. So that's what it's. He says that that's the size and the amount of money and loyalty that you get from customer if you build that kind of product. और इसमें ये एक और बात कहते हैं कि अगर प्रोडक्ट कोई अच्छा बनता है कॉम्पिटिटर से, या एग्जिस्टिंग कंपनी से, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ एप्पल. He says that he has talked to a lot of researchers, so not it's not his words but people who are experts in their industry. So ये कहते हैं कि ये मिले एक बंदे से जो कि चार्ल्स मंगर हैं, and he is some sort of an expert, and he says that once consumers form routines and habits, with a product, जो कि नया प्रोडक्ट है पुराना जो भी है, तो they don't have any problem paying extra money if they really like the product, if they really engage in it. I mean, अगर मेरी लॉयल्टी उससे बनी हुई है और मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर एग्जांपल है एप्पल का। एप्पल के फ़ोन जब आए थे 6 साल पहले, 12 साल पहले, और अब क्या रेट हो गए हैं। मतलब 1.25 लाख का एक फ़ोन आता है, 1.5 लाख का फ़ोन आता है उनका हाईएस्ट मेमोरी स्टोरेज का, 1 TB का, 1.5 पौने 2 लाख का। दैट इज़ द पावर ऑफ having a good product for your customer. Now the point that I'm trying to make is he's just given you some examples, but क्या होगा उस ऐसे प्रोडक्ट में, that is the most important thing, कि वो क्या होगा। तो if you are able to bring value to your customer and you are able to solve a problem of his, then you are able to give him the best product. And इसमें ये कहते हैं कि कस्टमर उन्हीं को रेफ़र करते हैं, अपने फ्रेंड्स को उन्हीं प्रोडक्ट्स को रेफ़र करते हैं जो प्रोडक्ट्स आर रियली गुड प्रोडक्ट्स। दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट लाइक नॉर्मल प्रोडक्ट। और इसी में वो कहते हैं कि कंपटीशन इतना हाई है एक अच्छे प्रोडक्ट को निकालने के लिए, कि if you are a new entrant and if you want to beat the competition, the people who have been in the business for a long time and you want to enter that business for that product, तो आपको उस प्रोडक्ट को कम से कम 9 गुना बेहतर करना होगा, तभी जाके कोई बंदा एंगेज होगा। वो कहता है ऐसा क्यों होगा, इतना हाई बार क्यों है, वाई द बार इज सो हाई, लाइक इफ योर प्रोडक्ट हैज़ टू बी 9 टाइम्स बेटर देन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, विच इज़ रियली हाई, राइट। कि मैं एक पेंसिल निकाल रहा हूँ, तो मेरी पेंसिल, अगर कोई कंपटीशन है नटराज की पेंसिल का मार्केट में, जो कि सबसे लीडिंग पेंसिल मेकर है, तो मुझे उसकी अपनी मेरी पेंसिल का प्रोडक्ट उसकी पेंसिल से 9 गुना बेहतर होना चाहिए। So he says that the reason it is because old habits die hard. And उसके लिए वो एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि as human beings, we have certain routines. जैसे मेरा भी एक रूटीन है, I and if I'm coming out of that routine, अगर मैं वो रूटीन को तोड़ूंगा, कुछ नया करना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एट 8 or 9 o'clock for years, and suddenly I decide कि नहीं, अब से मैं सुबह 5 बजे उठूँगा। तो if I'm able to do it, like say for example 5 days, 6 days, 7 days, but 15-20 दिन आते आते अगर मैं बहुत ही मोटिवेटेड रहा, अब मैंने कर लिया तो अलग बात है, लेकिन 15-20 दिन आने के बाद एक ऐसा पैटर्न फिर से, अगर मेरा फोकस ख़त्म हो गया, तो आई गो बैक टू द old pattern. That's what he says. He says that we have this neural pathways in our brain, old pathways, old routines that come up once again if we lose focus, which means that the habit of using a product is so ingrained in our mind, that old product, कि हम उसके इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हमारे
न्यूरल नेटवर्क्स इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि एक नया प्रोडक्ट यूज करना, it's a big thing, it's a big thing for anyone, and we don't find it, interesting, useful, or engaging enough. Why? Because उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि वो मैं प्रोडक्ट छोड़ दूँ और इस प्रोडक्ट को यूज़ करने लगूँ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हमारे एज़ ह्यूमन बीइंग्स, हमारे दिमाग में। तो साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि ये एक न्यूरल पाथवे सेट हो जाते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक आउट ऑफ इट। एंड he also says that he gives the example of, I'll give you two three examples here. He gives the example of alcoholics, people who are into alcohol, they go for rehabilitation, वो रिकवर कर जाते हैं उस हैबिट से, लेकिन अचानक से कोई एक इंसिडेंट होता है, दे लूज देयर फोकस। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, they lose their focus and they're suddenly back to their same ways. Same with people who are fat, they lose fat, they take a year or two to lose fat, or in some cases months, and once they have lost fat, जब वो fat lose कर लेते हैं, they are happy and gay, but suddenly कुछ ऐसा होता है, एक शादी या एक वेकेशन या फिर एक स्ट्रेस, जिसके वजह से वो फिर से अपनी ओल्ड हैबिट्स में आ जाते हैं, फोकस लूज कर देते हैं, खाने लग जाते हैं, एंड दे आर बैक टू देयर नॉर्मल शेप, व्हिच इज बीइंग फैट. And also, he goes in history, Nir Eyal goes in history and talks about the example of something that we all use. और वो क्या है? वो अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर रहे हैं अगर आप मुझे देख रहे हैं, and everyone in the world uses it. Nobody can escape it. It is the keyboard, the the keyboard in our mobile phones as well. The way it has been set up, QWERTY. If you see, आपकी जो पहला रो है उसमें लिखा हुआ है QWERTY. That's the keyboard that we use. And to tell you, it was devised, or it came into reality, came into existence. ये बोर्ड, कीबोर्ड जो बना, वो 1870s में बना, और उस समय एक टाइपराइटर में यही कीबोर्ड था, एग्जैक्टली यही फॉर्मेशन थी सारे अल्फ़ाबेट्स की, इसी जगह पर हर इसी ऑर्डर में रखे गए थे। और क्या आपको लगता है कि इस तरीके का डिज़ाइन को, एक बढ़िया डिज़ाइन लाने की जिसमें स्पीड हमारी बढ़ जाए, कोशिश नहीं की गई? बहुत कोशिश की गई, बहुत से डिज़ाइनर आए, इनफैक्ट इज़ गिवन द नेम ऑफ अ डिज़ाइनर कॉल्ड प्रोफेसर ऑगस्ट डोवाक्स कीबोर्ड डिज़ाइन। ये इंफॉर्मेशन पेज 23 पर है, आप अगर ये बुक खरीदेंगे तो यू कैन रीड इट। एंड ही सेज दैट कि वहाँ पर उन्होंने डिज़ाइन इस तरीके से किया कि जो वाल्स हैं वो सब एक साथ आ जाए, मतलब AEIOU एक साथ आ जाएँ और ईजिली हम टाइप कर सकें। ऐसा कीबोर्ड बनाया उन्होंने, डिज़ाइन किया, लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया, क्योंकि वी आर सो हैबिचुअल टू यूजिंग दिस कीबोर्ड दैट कोई बहुत ही एक्सेप्शनल डिज़ाइन होगा जहाँ पर वो बहुत ही ईजी टू यूज़ होगा, तभी हम उसको यूज़ करेंगे। तो व्हाट इज़ ट्राइंग टू से इन दिस बुक इज़ कि ये ट्रिगर्स होते हैं हमारे, अगर ये ट्रिगर्स हैं और these triggers get into a habit, only then we'd be using the new product. So the product has to be so good. But he talks about other things also. Now he emphasizes on this fact. He gives a great example. He says that अगर आपको ओल्ड हैबिट अपनी ख़त्म करनी है और एक न्यू हैबिट में लाना है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से, तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी कि उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़र यूज़ करे, तो ये ऐसा हो सकता है, ओल्ड हैबिट्स ख़त्म हो सकती हैं। इसका एग्जांपल उन्होंने क्लियरली दिया है, गूगल सर्च इंजन। जब गूगल सर्च इंजन आया था, उस टाइम पे बाकी सर्च इंजन भी थे जो कि मार्केट में थे उस टाइम पर, एंड दो सर्च इंजन्स वर नॉट पावरफुल इनफ टू कम्पीट विद गूगल, बिकॉज उनका जो पेज रैंक एल्गोरिथम है वो बहुत पावरफुल है। द वे वो सर्चेस को आसान बना देता था, और एक सिंपल लेआउट था गूगल, जैसे गूगल का सर्च बार and Google page, that's it, you type in and you get the result. तो what he says that कि गूगल इतना आसान बन गया लोगों के लिए कि गूगलिंग एक टर्म बन गया कि कुछ भी करना है तो ढूंढना है तो मतलब गूगल करो उसको, एंड गूगल, just google it became a verb, right? So if you come out with a product in the market which is so good that it's as good as Google, that you use it so often कि वो इतना आदी बन जाए हमारे दिमाग में कि हम उसके बिना सोच ही ना सकें कुछ करने का, तो you can break that old habit and get that new product for the customer. But again, as I said, it has to be 9 times better.
एंड ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ बिंग सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कि अगर आप बिंग पे जाएंगे तो बिंग में भी अगर आप टाइप करेंगे कोई चीज़ उतनी आसानी से ही सब कुछ खुल जाता है। एंड ही सेज कि डिफरेंस इतना इम्परसेप्टेबल, इतना कम है कि सेकंड्स भी नहीं है, मिली सेकंड्स का ही फर्क होगा कि आपको जो सर्च कर रहे हो गूगल पे और जो सर्च कर रहे हो बिंग पर, उन दोनों का डिफरेंस। But still, people prefer to go on Google because they're so used to that design of Google, that typing on Google search engine, that they don't want to go anywhere else but Google. और over the period of time Google ने अपने आप को इतना improve किया है, मतलब आप टाइप इन करो शॉप्स नियर मी, सो क्योंकि मैंने पहले हिस्ट्री में वो चीज़ खोज रखी है, ढूंढ रखी है, सर्च कर रखी है गूगल पे, एंड गूगल नोज वेयर आई गो इन 24 hours, दे नो कि मैं यहाँ जाता हूँ, ये मेरे प्रेफरेंसेस हैं। सो द मोमेंट आई टाइप एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू समथिंग दैट आई यूज इन द पास्ट, इट विल गिव मी सजेशन राइट एट द बॉटम कि मैं उसमें चूज कर सकता हूँ ऑप्शंस। So beautiful. I mean, just imagine the way they have set up their search engine with a powerful algorithm which captures every possible human you know uh, desire desire to get information. And he says that it's not possible, but there is an exception. So he ends this chapter, this trigger, this habit zone chapter. I'm sorry, it's habit zone chapter that I'm reading out to you, that I'm talking about. uh, that he ends the habit zone chapter with an example of a company which we all use. Again, it is the biggest e-commerce company, e-commerce site in the world, and I'm sure you know now which particular product that I'm talking about. It's Amazon website, right? Amazon app. अमेज़न ऐप पर वो बोलते हैं कि अमेज़न पे लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं, लेकिन इतना नहीं जाते होंगे जितना गूगल पे जाके रोज़ आदमी चेक करता है चीज़ें, राइट? ये क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है। तो ही सेज़ कि Amazon, though, is not used as frequently as say for example Google, but still Amazon is right there in the habit zone. Why? Because of the perceived utility. मैं फिर से बोलता हूँ, perceived utility. कंज्यूमर के दिमाग में एक परसेप्शन आता है, एक विचार आता है, वो इस तरीके से देखते हैं अमेज़न ऐप को कि अमेज़न ऐप पे जाके किसी प्रोडक्ट के बारे में देखूँगा तो मुझे अच्छा ही प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अमेज़न, द वे अमेज़न हैज़ सेट अप their interface is such that you can compare two products and and the quality and their price and the reviews at the same time and see which one you should buy. And sometimes you can buy the same product from two different sellers at different rates with the reviews in it. It is such a beautiful tool. Imagine कि आप खड़े हुए हैं और आपको कुछ खरीदना है, और एज राइटर्स पुट इट, एंड मैंने भी ये देखा है, एग्जाम्पल मैंने भी प्रैक्टिकली किया है कि लोग स्टोर्स पे खड़े होते हैं and they go to Amazon and check the price of that product before buying it from the physical store. If the Amazon price is somewhere, you know, higher than the product that they're buying from the physical store, तो वहाँ से वो choose करते हैं, नहीं तो वो Amazon पे जाके ही सब compare करते हैं. So he says that that if you want a consumer to be in that habit zone, then you either, if you see the chart here, it says frequency here, जो कि y axis है, और x axis पर आपका डला पड़ा है perceived utility. तो he says कि shopping on Amazon is right here, which means frequency इतनी नहीं है, लेकिन perceived utility इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि वो habit zone में आ जाता है वो। और गूगल की परसीव यूटिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब लोग कहते हैं गूगल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सर्च करनी पड़ती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखिए कहाँ पर है गूगल, यहाँ पर राइट बाय द टॉप। सो फ्रीक्वेंसी इतनी है गूगल की कि इट अगेन फॉल्स इन द हैबिट जोन। सो ही सेज दैट he ends this chapter, this habit zone chapter, by saying that if you really want your product to succeed and work in the market, then you got to have either a product which consumer uses frequently, like Google, or it has a perceived utility which gives them a competitive edge over other players in the market for the same product, which means that it has to be at least 9 times better to change our routine, which the neural pathways that are set in our brain, which pushes us to use the product
that we want to use, the new product that we want to use, and not the old product that we are already used to. So वो कैसे होगा, ये इसके बारे में ये बताते हैं कि it has to be really good and gives those examples. So इसमें एक और section है which talks about vitamins and painkillers. It basically says कि vitamins basically फील गुड के लिए होते हैं. vitamins आप क्यों खाते हैं, और इसके पीछे एक रिसर्च भी है कि vitamins eventually you know we have vitamins but they have no perceived benefit, रिसर्च ये कहती है. बट मैंने ये इतना गूगल करके अगेन देखा नहीं है, मैंने इन्फॉर्मेशन रिसर्च नहीं किया, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग ये कहते हैं. एंड पेन किलर्स व्हेन यू हैव पेन किलर्स, द पेन इज गॉन बट इट्स मोमेंट्री, वो होता नहीं है ज़्यादा. तो वो कहते हैं कि इन्वेस्टर्स अब आते हैं किसी प्रोडक्ट को देखने के लिए आपके पास, तो पूछते हैं कि आप मेरा पेन किलर दे रहे हो मुझे या फिर वाइटामिन दे रहे हो, इन अ वे कि व्हाट इज़ इट दैट यू गिविंग मी, अ परसीव्ड बेनिफिट विच इज़ ऐसे दिख रहा है कि हो रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को कि अच्छा फील हो रहा है, या फिर कुछ फ़ायदा हो रहा है, मतलब पेन ख़त्म हो रहा है. तो ही सेज राइट एट द एंड कि when you have a product which is a combination of the two, wherein you are able to ease the pain of the consumer and force or push them to use the product, and also give them the good feeling that they're using something really good, that combination of vitamin and painkiller, then you have got a good product. So इस बुक में एक और बहुत अच्छी बात ये है कि इस बुक में सबसे खूबसूरत जो मुझे अच्छा लगा, जो कि जिसके थ्रू मुझे पता चला कि मुझे पढ़नी चाहिए, उन्होंने भी ये स्ट्रेस दिया था कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर there is this section called remember and share and do this now. So the author asks these questions to you कि आप ये एक्सरसाइज करिए कि डू दिस नाउ. जैसे कि इस चैप्टर के बाद हैबिट जोन के बाद ये कहते हैं कि इफ़ यू आर बिल्डिंग अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट, राइट डाउन द आंसर टू दीज क्वेश्चंस. What habits does your business model require? What problems are user turning to your product to solve? तो क्या हैबिट चाहिए होंगी यूज़र के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं कि जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर दें. हाउ डू यूजर्स करंटली सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड व्हाई डज इट नीड अ सोल्यूशन. कैसे इस समय सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उस प्रॉब्लम का यूजर्स, एंड क्यों उसका सोल्यूशन चाहिए, एंड हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू एक्सपेक्ट यूजर्स टू एंगेज विद योर प्रोडक्ट once they are habituated. This is really important because this brings this gets you create a circle of engagement with the user. If you have this product which customer frequently go to use, engage with, and if you're able to do that, because YouTube का algorithm ये कहता है, since I'm making YouTube videos, to give you an example, कि अगर आपको अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, अपने engagement बढ़ाना है अपने videos पे, then you should be on YouTube often, and you should decide at least twice in a week you are there on YouTube talking about your video. So that's what it is talking. This particular question is talking about, and then it says, what user behavior do you want to make into a habit? कि कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आप हैबिट में बदलना चाहते हैं उस बिहेवियर का. So all of this is that, and then again, it's a summary of whatever I've discussed here. Remember and share. So that is about it. I've talked about this particular chapter, habit zone. Kal, hopefully, yet day after, I think day after, which is I'll update you on Instagram and YouTube as well. I'll put a post out here tomorrow कि मैं कब कर रहा हूँ live stream, where we'll be talking about trigger and action chapter, and we'll cover the rest of it in the future live streams. I hope you understood what this chapter was all about. तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, engaging लगा ये लाइव स्ट्रीम, और आपको पता चला कुछ इन्फॉर्मेशन इस बुक के बारे में, और आप ये खरीदना चाहते हैं, then you can definitely go buy it. And there's another book that you must read, Habit. This is another book which I liked very much. I read it a long time back. तो मैं मतलब इसके कंटेंट इतना याद नहीं मेरे को, लेकिन मुझे ये साइकिल याद था, इसलिए मैंने ये मेंशन किया शुरू में, ट्रिगर, एक्शन और रिवॉर्ड का, क्योंकि इसमें भी मेंशनड है. But entirely different treatment in these two books.
And so that's about it. So if you like this content, please subscribe to my channel, keep watching my videos. मैंने और भी videos बना रखे हैं. You can check out my playlist in my YouTube channel section. I made videos recently on a book which I loved, loved. This is Shoe Dog by Phil Knight. अगर आपको ये book पढ़नी है, and if you are an entrepreneur and if you want to start a business and you're lacking the motivation, or even if you're a student, you're not satisfied in your job, you're lagging here and there, your motivation, your focus is not there, I highly recommend this book. You just go ahead and read it. इसका भी review मैंने अपने latest video में कर रखा है. You can check it out in the playlist called book reviews or in my latest video section. Go ahead and read this book, buy it, or better still, go ahead, go and just watch my video, share a video on YouTube channel, share this video if you like this live stream, like it, like my other videos also. Go and check all of them if you can. आप सारे videos check out करिए. And thank you so much for being here. On if you watch it in the future, tomorrow, day after, let me know how it was. Comment down below. Let me know how much you like this video. Thank you so much. I'll be coming back to you with the live stream, I think day after, which is in 2 days. मतलब बुधवार को मैं 9 या 10 बजे, 10 बजे होपफुली, या 10 साढ़े 10 बजे मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा. टिल देन, थैंक यू सो मच. नमस्कार, टेक केयर एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट.